Hello everyone, welcome to all CMAT aspirant, those who are targeting the 2024. So innovation and entrepreneurship section से हम basically focus करेंगे financial institutions and government program for the startup. So top 50 question basically we will see in this part 4, and in a previous part we already covered about the innovation related questions, entrepreneurship related question and startup related question. So तीनों से relate करके हमने काफी अच्छे questions की practice की है previous video में part 3, part 2 and part 1. So today we will see the part 4, and in this part basically our focus should be on financial institutions and government program, and from these two area I can say 3-4 question you will see in your exam. So काफी अच्छे से practice करना, related information को try करना, update करने का, and these remaining part we will cover in upcoming part. So guys, if you want to get this questions for the revision purpose, so you can join these two groups, social WhatsApp and Telegram group, where I will share this PDF. And these are the social media platform where you can join us to get the continue updates. And video अच्छा लगे, valuable लगे आपके study के लिए, तो channel को subscribe कर लेना and video को like कर लेना. Now see the first question. The FAME India scheme support startup involved in. So basically FAME India scheme, it's related to which field? Financial services and banking, food processing and agriculture, film and media, and electric and hybrid vehicles manufacturing. So correct answer is what? Electric hybrid vehicles manufacturing. काफी famous है India government का program for the related to electric vehicles. Next is what? The credit guarantee fund trust for micro and small enterprises scheme provides the credit guarantee coverage for the loan up to 10 lakh, 50 lakh, 1 crore and 5 CR. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 CR. तो इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट के वेल नोन प्रोग्राम है उनमें किस तरह की फंडिंग होती है, किस टाइप के लोगों को होती है, ये सब सारी बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो ज्यादा बेटर है. इजिली आप स्कोर कर सकते हो 18 से 20 आउट ऑफ 20 यू कैन गेट. अदरवाइज ट्राई करो कि एटलीस्ट 18-90 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो. हार्डली एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना बन पाए. तो काफी बेनिफिशियल सेक्शन है, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो इसमें विद इन द लेस टाइम. Which scheme aim to provide the mentorship, networking and funding opportunity to startup in biotechnology sector? So is it Startup India, Biotechnology Ignition Grant Scheme, Atal Innovation Make in India Initiative? So correct answer इसका हो जाएगा Biotechnology Ignition Grant, which is known as a big scheme. Next is what? The New Generation Innovation Entrepreneur Development Center, which is known as the New Gen IEDC scheme, is implemented by which organization? So correct answer is what? National Institute of Technology. Next is what? The Nidhi EIR program support startup by providing seeds funding, equipments grant, international exposure, networking opportunity and tax benefit. So what is the correct answer is what? National exposure and networking opportunity. So basically such type of word, for example seeds funding and bootstrapping, इन सब wording से आप जितना ज्यादा aware रहोगे related question you can see. For example, here I will show you the one section which is designed by us to prepare the innovation and entrepreneurship section. So guys, अगर से जो भी better content है आपके पास तो it's good. अगर से नहीं है तो काफी अच्छे से prepare कर सकते हो. And see here the sectional program which will give you the detailed information related to the innovation and entrepreneurship, जिसमें आप पूरा हर एक इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजी, सीईओ, सारे जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनसे रिलेटेड पूरा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलता है सेक्शनल पार्ट में. एज वेल एज you will, if you want, so here is a mock test which is a test basically CMAT aspirant के लिए. It's a very important for those who are going to appear. So mock test is a very valuable and important thing before appear the actual exam. So you should to write the mock test. So here you can see these mock tests will be helpful for you. So concern is what कि when you are preparing, so just with the question and थोड़ा सा theoretical part and quiz की understanding होगी तो काफी अच्छा score कर सकते हो. Now see here the next question. The Aspire scheme focus on the promoting the entrepreneurship in which sector? So Aspire is very well known program. So ASPIR, and it's related to agriculture and rural industry, information technology, healthcare and pharmaceutical and renewable energy. Correct answer इसका हो जाएगा agriculture and rural industry. Next is what? Which scheme provides the financial assistance for patent filing to startup? काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का. सो देखो जितने भी वैरायटी ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम हो सकते हैं वो सबसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. फॉर द डिटेल इफ यू वांट, सो यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको शो किया, तो उससे रिलेट करके सारे डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी. तो हार्डली एनी क्वेश्चंस यू विल लीव. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR सपोर्ट स्कीम. ओके, तो जितने भी अच्छे गवर्नमेंट की स्कीम है फॉर द स्टार्टअप के लिए उनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इट मींस पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. तो
क्वेश्चन किसी भी में वे में पूछेगा तो इजिली आप आंसर कर सकते हो। द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर द स्टार्टअप लुकिंग टू एक्सपोर्ट their product, import raw material, register intellectual property and acquire the funding for from the banks. So जिसका correct answer हो जाएगा export their products. Next is what, which initiative provide a platform for startup collaborate with the government and showcase their solution to solve the pressing challenges. So what is the name of basically this scheme? Startup India, Atal Innovation Startup India Hub, Pradhan Mantri Mudra Yojana. Okay, so राइट आंसर इज स्टार्टअप इंडिया हब। तो देखो ये जितने भी स्कीम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं सबसे आपको अवेयर रहना, क्वेश्चन किसी से भी कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। देन SIDBI मेक इन इंडिया लोन फॉर एंटरप्रेन्योर्स enterprises scheme focus on providing the financial assistance to startup in which sector? So basically this is smile program it's related and for which sector? Manufacturing, information technology, renewable energy and textile. Correct answer is what? Manufacturing. तो याद रखना स्माइल जो प्रोग्राम है बेसिकली so it's related to manufacturing. Next one is what? The Technology Business Incubator TBI scheme support the creation and nurturing of startups in which sector? So TBI it's related to agriculture, technology, healthcare and education. So these all are the important scheme guys. So इसी तरह से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया है as well as detailed information is very important for you to update. Which government agency implement the Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY? This is also very well known scheme. Under this scheme 10 lakh up to 10 lakh loan anyone can get for the small businesses. So these all are the options: Small Industry Development Bank, National Bank, Agriculture, Reserve Bank of India, National Skill Development Corporation. So correct answer is what? Small Industry and Development Bank of India. Next is what? The National SC/ST Hub scheme aim to support entrepreneur belonging to which community? तो देखो नाम से ही आप समझ सकते हो कि दिस प्रोग्राम इज फॉर विच टाइप ऑफ द कम्युनिटी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब, ST एंड शेड्यूल्ड कास्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट? which scheme focus on providing the financial assistance and support to women owned entrepreneurs? So what is the name of the basically scheme? Startup India Seeds Fund, Startup India scheme and Pradhan Mantri Mudra Yojana. So correct answer is what? Startup India scheme. Next one is what? The Atal Innovation Mission aim to promote the innovation and entrepreneurship among the group of women's entrepreneur, rural entrepreneurs, young entrepreneur and senior citizens. So देखो Atal Innovation which is also implemented on a school level to spread the understanding about it. So correct answer is what? Young entrepreneurs के लिए basically to promote the young entrepreneur this scheme is for. Next one, which scheme provide the funding support to startup through an equity infusion? So is it Startup India scheme, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Atal Innovation Mission and Startup India Seeds Fund and scheme? आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो लगभग यही सब सारे स्कीम है। सो इनसे रिलेट करके आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग इफ यू विल इंक्रीज तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? So is it Startup India Seeds Fund, Startup India Scheme, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Atal Innovation Mission? So correct answer is what? Pradhan Mantri Mudra Yojana. So this is the separate from these schemes. Next one is the Startup India Initiative was launched by the government of India in which year? 2014, 15, 16 and 17. तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड भी है। So just remember 2016. Next one, which government body in India responsible for supporting the startups? So is it Ministry of Finance, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Commerce and Industry? So correct answer है Ministry of Commerce and Industry. Next is the National Investment and Infrastructure Fund NIIF support the startup and projects in infrastructure sectors such as healthcare and pharmaceutical, transportation and logistics, education and training and hospitality and tourism. So correct answer is what? Transportation and logistics, just remember. Next is which institution facilitate the credit linkage and financial assistance to startup and MSME engaged agri-business and entrepreneurship? So what is the name of the basically institution? So National Payment Corporation, National Bank of Agriculture Rural Development NABARD, India Renewable Energy Development Agency, National Housing Bank. So correct answer is what? National Bank for Agriculture and Rural Development. So now see the next one. The National Innovation Foundation NIF support the grassroots innovators and startups by
providing the low interest loan, offering the technical and managerial assistance, conducting the market research study and organization international trade and fair. तो करेक्ट आंसर इज बी, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड. सो गाइज इस प्रैक्टिस के साथ माय सजेशन इज कि आप खुद पहले ट्राई करो खुद से आंसर करने का एंड देन सी द करेक्ट आंसर. सो इन दिस वे इफ यू विल प्रैक्टिस सो दैट इज मोर बेनिफिशियल. आप अपने आप को इवेलुएट भी कर सकते हो. Which institution offer the funding support and facilitates the international collaboration for the startup in renewable energy sector? So is it Export Import Bank, India Renewable Energy Development Bank, Small Industry Development Bank, SIDBI and NABARD? Okay, so correct answer इसका हो जाएगा India Renewable Energy Development Agency. So for the different area के लिए there is a different financial institution. So just try to understand they are working for what and to supporting the which type of the startup. The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) provides the financial assistance to startup primarily in a which sector? So देखो IFCI it's basically provide the financial support to which sector? Agriculture, infrastructure, information and manufacturing. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है यहाँ पे द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC सपोर्ट द स्टार्टअप्स बाय. काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया. So it's provide the grant to research and development, offering the skill development training, facilitate the international trade partnership, managing the credit guarantee scheme. So basically it's related to skill development. तो mostly आप option B इसका correct हो जाएगा and C offering the skill development and training. Under this scheme basically जो न्यू यंग स्टूडेंट है उनको टेक्निकल ट्रेनिंग लाइक इलेक्ट्रिशियंस, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर्स. So there is a lots of the courses under this national scheme and development corporation जो NSDC ने लॉन्च किया है. तो एक काफी वेल नोन प्रोग्राम है इंडिया गवर्नमेंट का. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट यहाँ पे विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग द वेंचर कैपिटल एंड फंडिंग सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स एंड अर्ली स्टेज बिजनेसेस. So which one is the correct answer basically? So see here, Small Industry Development Bank of India. Next is what? Which institution play the vital role in funding startup MSME by refinancing the loan provided by the primary lending institution? So the correct answer of this question is what? National Bank for Agriculture and Rural Development. Next is what? The National Stock Exchange NSE has launched a platform especially designed for startup and SME called NSE Emerge and NSE Gift City, NSE Collateral Management Services and NSE Corporate Bonds. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा NSE Emerge. तो देखो यहाँ पे वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन सारे इंस्टीट्यूशन से स्टार्टअप गवर्नमेंट प्रोग्राम. तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो सारे यहाँ पे कवर कर रहे हैं. अगर से वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन वैल्यूएबल है एंड इट्स एडिंग द वैल्यू इन योर प्रिपरेशन, तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट यहाँ पे विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द ग्रांट, इक्विटी एंड डेप्थ फंडिंग टू स्टार्टअप एंड इनोवेटर्स फोकसिंग ऑन द सोशल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेसिकली? तो पहले खुद से आंसर ट्राई कर लो फिर देन सी द करेक्ट आंसर. नेशनल इनोवेशन एंड फंडिंग फाउंडेशन. नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. सो कौन सी इसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है? नाबार्ड, SIDBI. What is the exactly question is asking? Development Financial Institute in India is non-banking, NBFC. So is it Industrial Corporation in India and Exim Bank? So correct answer इसका हो जाएगा Industrial Finance Corporation of India is a non-banking finance company. Next यहाँ पे which of the following is not among the all India financial institutions? AIFI, so NABARD, SIDBI, Exim Bank and RBI. So correct answer इसका हो जाएगा RBI. It's not a financial institution. Basically RBI is what? It's a regulatory body. Okay, next, in which year Export Import Bank of India Act was passed to establish the EXIM? So basically export import को support करने के लिए यहाँ पे एक बैंक फॉर्म किया था which is known as Exim Bank and full form of it's what? Export Import Bank. So in which year it was founded? So इनके थोड़े से historical point when foundations इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. कभी कभी होगा कि कोई CEO MD अगर से रिसेंट करंट अफेयर्स में चेंज हुआ है तो वहां से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए. सो दैट्स माय सजेशन इज व्हाट कि प्रैक्टिस करो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की, बट साथ में डिटेल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करके रखोगे तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो. शायद ही कोई ऐसा एरिया रिमेनिंग रह जाए जो आपने ना कवर किया हो. तो क्वेश्चन के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. माय सजेशन इज व्हाट कि इनसे रिलेट करके जैसे जो सारे गवर्नमेंट स्कीम है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ो. तो बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड इज, सो नाबार्ड का मेन फंक्शन क्या है? ग्रांटिंग द क्रॉप लोन फॉर टू फार्मर,
future research, providing the rural development and facilitating the credit flow, promotion and development of agriculture. So correct answer is what? Facilitating the credit flow for promotion and development for the agriculture. So agriculture field के लिए काफी work करता है नाबार्ड, and जो basically monitoring area है नाबार्ड का, it's for the agriculture and related product. Next, the word bull and bears are associated with. तो यहाँ पे शेयर मार्केट से रिलेट करके भी कभी कभी क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछ लिया जाता है. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बैंकिंग, मार्केटिंग एंड स्पेकुलेटर. तो बेसिकली इसको हिंदी में जो बोलते हैं हम सट्टाबाजी. ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पेकुलेटर. Which Indian exchange is planning to launch its own initial public offering IPO? So is it Saurashtra Kutch Stock Exchange, National Stock Exchange, Cochin Stock Exchange and Bombay Stock Exchange? So correct answer is National Stock Exchange, NSC. The Ministry of Electronic and Information Technology might support the startup in electronic and IT sector through the initiatives such as Electronic Development Funds, EDF, Technology Business Incubator, Biotechnology Industry Research Assistant Council, BIRAC, or National Manufacturing Competitiveness Council. So which one is the correct answer? The National Manufacturing Competitiveness Council, NMCC. Next one, the Industrial Development Bank of India, IDBI, offer the financial product and services to startup primarily in which sector? So is it real estate and construction, information technology and software development, manufacturing and infrastructure, and retail and consumer goods? So it's provide the support basically which sector? So manufacturing and infrastructure projects. What distinguishes a bank from the other financial institutions? So how we can define basically nature of the banks and other financial institutions? What the thing is make it different? So accepting the demand deposit as a courtesy, accepting the demand deposit lending, accepting the loan and borrowing. So basically which type of the things or feature you can say which divide the financial institution and bank? So simple इसका आंसर हो जाएगा accepting the demand deposit. So बैंक क्या करता है? It's accept the deposit and जो lend कर सकता है, but it's not in a financial institutions. The amount of money in India is controlled by, very important easy question for your understanding. So is it Planning Commission, Commercial Bank, Government of India and Reserve Bank of India? So what is the name of the basically institutions which control the money in India? So correct answer is what? Reserve Bank of India. And you know, with the help of the monetary policy, with the help of different rates, CRR, SLR, bank rate, repo rate. So help of these monetary policy, RBI can control the flow of money in a market. Next, which institution provide the long-term funding and financial assistance to infrastructure project in India? So basically long-term funding के लिए यहाँ पे question पूछ रहा है. Is it Small Industry Development Bank of India, Industrial Finance, National Investment and Export-Import Bank? So correct answer is what? National Investment and Infrastructures of Fund, which is for the long time loan. A non-banking financial institutions, NBFC basically, can accept the demand deposit, can issue the check to the customer, can't accept the fixed deposit and can't accept the demand deposit and can't issue the checks. So correct answer इसका हो जाएगा can't accept the demand deposit and can't issue the checks. Basically this is the feature of what? Bank. Okay, so जो financial institutions होते हैं वो ये टास्क नहीं कर सकते. बेसिकली एक जो कस्टमर से कैश एक्सेप्ट करना फिर उसको देना, तो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ द एनबीएफसीज, दिस इज द फीचर ऑफ द बैंक्स. Which of the following is our example of secondary or indirect financial instruments? So is it equity share, preference share, post office saving deposit and bonds? So correct answer इसका है post office and saving deposit. Next, the name Wall Street is used to synonyms to. Basically किस place को बोलते हैं Wall Street? So is it Bombay Stock Exchange, Nasdaq, National Stock Exchange and New York Stock Exchange? So which place is known as the Wall Street? So I hope कि most of the time आपने सुना भी होगा न्यूज़ में जब भी when you are reading so about the Wall Street. So it's a New York Stock Exchange का जो synonyms या उसको इस नाम से भी जाना जाता है Wall Street. तो New York Stock Exchange remember रखो. SIDBI is a fully owned subsidiary of IDBI, RBI, SEBI and IFCI. So these are the well-known financial institutions of India. So just try to read more about this. And if these institutions are part of the news, so also try to update whatever the updates जो भी जिस point of view से news में है, try करो अपने आप को update करने का. Zero interest bonds are always issued at premium, at discount with detachable warrant. Any of the above. So correct answer इसका हो जाएगा at discount. So just remember it.
Next, money market mutual fund is also known as growth fund, balance fund, income fund and cash fund. So this money market mutual fund से related जो यहाँ पे एक new name है basically, so it's known as what? Income fund. Next, the small investor gateway to enter into the big companies. देखो काफी better question है, your understanding to check your understanding related to mutual fund basically. तो इसका correct answer हो जाएगा mutual fund. So questions may be asked in this way. So if you are aware about this all the things, mutual fund क्या होता है, bonds क्या होता है, equity क्या होता है, ये सब सारी चीजें, तो easily किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो आप आंसर कर सकते हो. तो जस्ट ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ द वर्ड्स. जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सब सारे से रिलेट करके इनका एक्जैक्टली मीनिंग क्या है आप अपडेट रहो. द फर्स्ट इंडियन इक्विटी इंडेक्स इज इट निफ्टी, सेंसेक्स, डोलेक्स एंड निफ्टी. तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेंसेक्स. नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सो इज इट आईडीबीआई, आईसीआई, आईएफसीआई, ऑल ऑफ द एबव. सो आई थिंक सारे लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड करते हैं. सी द करेक्ट आंसर. हाँ, यस, ऑल द एबव. तो ऑल द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म्स गोल्ड. ओके, सो दैट्स इट. 49 क्वेश्चन. आई थिंक नंबर का कुछ फर्क रहेगा. तो दीज आर द 49 और 50 क्वेश्चन यू कैन से. एक क्वेश्चन आई थिंक नंबर का कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा. Okay, so these are the most expected question for your exam. So just try to revise it, and if you want to download it, so description में आपको link मिल जाएगा, जाके वहाँ पे आप group join कर लेना, where I will share this PDF. So easily you will get. And for your preparations, my suggestion is what? Question की practice करो, and with it try to read in a detailed format. So question किसी भी वे में फॉर्म हो. इफ यू आर अवेयर अबाउट द वेल नोन गवर्नमेंट स्कीम, उसके डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अबाउट द इनोवेशन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर, इस स्पेशली इस सेक्शन की बात करूं तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. तो माय सजेशन इज दैट कि अगर से अभी भी आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, इधर इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल इनोवेशन या फिर जीके सेक्शन, so my suggestion is sectional program will be helpful for you, which is designed by us with respect to exams. So सारे valuable informations you will get here. काफी अच्छे से practice कर सकते हो. So this program for the innovations, for the GK and for the test series, here you can join for the mock test. So before appear the actual exams, my suggestion is what? कि at least mock test 10 mock test लिख लेना. You will evaluate yourself कि आपकी preparation कैसे चल रही है. And if you want, so within this 15 days, so this program will be helpful for you for the complete preparation, where you will get the mathematics, reasoning, English, सारे lectures आपको recorded format में मिल जाएंगे. So if you are seriously targeting the CMAT exam and want to get a good score, so these program definitely will be helpful for you. So try to join it, and if you have any doubts, so you can call on this number 8828581455, and you can visit on our website www.maneuveredu.com/MBA-entrance. And after that, if you have any doubt, any query, so you can ask in a comment. And if video is helpful for you, so channel को subscribe कर लो, video को like कर लो, because in the next part we will see some other important question for your preparation. And those who are targeting for the next year, so here you can join us for the classroom and online program. For example, classroom program के लिए Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, and for online you can call on this number 8828581455. तो expert faculty will guide you, जो continue exams को लिखते रहते हैं, difficulty level को understand करते रहते हैं, and उसी के according complete program को design किया जाता है. So for the next year you can join online or offline program, and after that if you have any doubt, any query, so you can ask in a comment. See you in next part. Thank you and Jai Hind.